Mm. So today we will see the fourth, fifth, sixth numerical problem of HC Verma. First one is a bus takes 8 hours to cover a distance of 320 km. What is the average speed of the bus? So the distance covered is 320 km and the time taken is 8 hours. So simply the average speed will be 320 by 8, that is 8 over 32, matlab 40 times, that will be 40 km per hour. This one is so easy. Okay. So moving to the next question, that is fifth one. The maximum speed of a train is 80 km per hour. It takes 10 hours to cover a distance of 400 km. So the maximum speed given is 80 km per hour. उसको जाने में जो maximum speed जो ट्रेन की नोट आउट की है वो 80 km per hour है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर करता है 400 km कवर करता है उसे 10 hours करता है. So average speed will be 400 km by 10 hours. That is 40 km per hour. Okay. So now we have to find the ratio of maximum speed to average speed. Maximum speed given is 80 km. So maximum speed by average speed will be 80 km per hour by 40 km per hour. You may write this one as well. Ratio में आपको कोई भी यूनिट नहीं रहता, वो खत्म हो जाता है. 80 km per hour cancel out 0 0 4 2. That will the ratio will be 2:1. Okay. So this will be the ratio of maximum speed to average speed. Now moving to the next one, question number 6. An object moves through 10 meter in 2 minutes and next 10 meter in 3 minutes. Calculate its average speed. So the total distance will be 10 meter plus 10 meter, that is 20 meter, and total time taken will be 2 minutes plus 3 minutes, that is 5 minutes. And so average speed will become total distance covered by total time taken 20 minutes by 5 minutes. That will be 4 meter per minute. 4 meter per minute. That's it. For question number 6 numerical problem. House. Okay. Now moving to the seventh numericals. As a car moves through 20 km at a speed of 40 km per hour and the next 20 km at a speed of 60 km per hour. Calculate its average speed. So in the first case, distance moved is 20 km, speed is 40 km per hour. So the time taken will be distance by speed 20 by 40, that is 1 by 2 hour, half hour. In next case, distance moved is 20 km and speed is 60 km per hour. So the time will be distance by speed, that is 20 by 60, 1 by 3 hours. Okay. So the average speed will be find in the way total distance by total time 20 plus 20. This 20 plus this 20, 20 plus 20 total distance, and total time will be 1 by 2 hours plus 1 by 3 hours. That will be 40 plus 1 by 2 plus 1 by 3 will become 5 by 6 hours. Okay. Ultimately 6 ऊपर चला जाएगा आपको 40 into 60 by 5, 5 8 are 40, 8 6 are 48 km per hour. So this will be the average speed of the car. Okay. Now moving to the 8th question. A boy leaves his house at 9:30 am for his school. The school is 2 km away and the classes start at 10 am. So उसका स्कूल का डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर और 9:30 घर से निकलता है और उसे पहुंचना कितने 10 बजे तक जाहिर सी बात पहुंच जाना होगा. सो द टाइम वो कितना ले सकता है मैक्सिमम हाफ एन आवर वो ले सकता है. ठीक है. डिस्टेंस को कितना कवर करना है 2 किलोमीटर कवर करना है. सो फिर इसमें मेंशन कर रहा है आपको इफ ही वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर. पहला किलोमीटर कवर करने में वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है. यहाँ पर याद रखिए कि आपको अब आप जो 9th स्टैंडर्ड में चले गए हैं ये डिस्टेंस को एस से डिनोट किया जाता है, डी से नहीं एस से. ओके. तो यहाँ पर डिस्टेंस उसका कितना है 1 किलोमीटर पहला केस में. अब वो स्पीड कितना है, स्पीड यहाँ पर वेलोसिटी लिखेंगे, बी से डिनोट करेंगे. 3 किलोमीटर पर आवर वो है मेंशन कर दिया है. और इस केस में उसको टाइम कितना लगेगा 1 by 3 hours. तो पहला 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से वो जा रहा है तो उसको टाइम लगेगा 1 by 3 hours. अब उसको पास टाइम बच रहा है कितना 1 by 3 hours वो ले चुका है, उसे आधे घंटे में पहुंच भी जाना है. सो 1 by 2 hours में से 1 by 3 hours को माइनस करेंगे, वी विल गेट 1 by 6 hours. सो द रिमेनिंग टाइम इज 1 by 6 hours और रिमेनिंग डिस्टेंस इज 1 kilometer. सो ही हैज टू कवर 1 kilometer in 1 by 6 hours. So his velocity will be 1 by 1 by 6. That is distance by time. So 1 by 6 it will become 6 km per hour. So the remaining next what is mentioned here, what speed should he walk to the second kilometer to reach just in time.
सेकंड किलोमीटर कैसे कितना जिस स्पीड से जाएगा जो टाइम पे पहुंच जाएगा, सो दैट विल बी 6 किलोमीटर पर आवर। दैट्स इज क्वेश्चन नंबर 8।